हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिकों में से अगर आपने जावास्क्रिप्ट के बिगिनर कोर्स कर रखे हैं ऑलरेडी और आपने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह करे होंगे तो आप जावास्क्रिप्ट के बेसिक सिंटैक्स वगैरह जानते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस के बीच की बातें होती हैं, तो इसको कवर करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में। तो ये होता क्या है? It's nothing but it's in a programming you often take something and extend this when you अगर आपने जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जावा के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, तो एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है, फिर दूसरी ऑब्जेक्ट क्लास होती है एंड वी एक्सटेंड फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट क्लास, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। बट इन जावास्क्रिप्ट में जो प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस होता है सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। फॉर इंस्टांस के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक यूजर ऑब्जेक्ट विद इज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स एंड वी वांट टू मेक एडमिन एंड गेस्ट स्लाइटली मॉडिफाई वेरिएंट्स ऑफ इट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तुम एक यूजर हो, तुम एडमिन भी बन सकते हो और गेस्ट भी बन सकते हो। तो इसके लिए तुम अलग अलग एंटिटी बनाओगे एक प्रोग्राम के अंदर, तो इट विल टेक सम मेमोरी स्पेस टू रिड्यूस द मेमोरी स्पेस एंड ओके, और परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो स्लाइटली मेक द फ्रॉम द यूजर ऑब्जेक्ट वी कैन मेक एडमिन एंड गेस्ट यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, यू कैन सी दैट in diagram that in JavaScript objects have a special hidden property which is known as prototype, as name is specification that is either null or reference another object. The object is called prototype. Okay, so यहाँ पे क्या होता है, जो ये कहना चाह रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर इज अ प्रोटोटाइपल लैंग्वेज। अगर तुम्हें नहीं पता तो जावास्क्रिप्ट में जो भी फंक्शंस, मेथड्स, एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, वो सब एक ऑब्जेक्ट से आ रहे होते हैं। तो तुम ब्राउज़र में चेक कर सकते हो, मैं तुम्हें एक सेकंड दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करें, कंसोल पे जाएं और यहाँ पे अगर हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो फॉर एग्जांपल लेट const let a is equal to new object, oh shit, ऑब्जेक्ट अगर अनडिफाइंड के अंदर, यहाँ पे अगर डॉट एरे के अंदर, डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम यहाँ पे जाते हैं, सो एक प्रोग्राम दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे कॉपी करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल से समझो, एक दो दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, एक एनिमल और एक रैबिट। तो रैबिट और प्रोटोटाइप एनिमल, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रैबिट का प्रोटोटाइप होगा ना वो एनिमल पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एनिमल की प्रॉपर्टी है वो रैबिट को मिल जाएगी। तो इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इट्स ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ये इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे मेथड्स ऑब्जेक्ट मिलेंगे, कंस्ट्रक्टर, इसकी जो प्रॉपर्टी मिलेगी। फिर यहाँ पे एक और प्रोटो गेटर और सेट होता है। गेट प्रोटो के अंदर जाओगे तो फिर तुम्हें प्रोटोटाइप मिलेगा। फिर उस प्रोटोटाइप के अंदर जाओगे तो तुम्हें और प्रोटोटाइप मिलेंगे, और उस प्रोटोटाइप के अंदर जाओगे तो यहाँ पे तो है, यहाँ पे भी प्रोटोटाइप मिलेगा। तो ये जो सीरीज है ना, ये हायरार्किकल सीरीज है, ये जितना अंदर जाओगे उतना ही चलते जाएगा। एक पॉइंट पे एक नल वैल्यू आती है, वहां पे तुम्हें वो पता चलेगा कि ये जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी रेफरेंस आ रहे हैं ना, वो सब एक ऑब्जेक्ट से आ रहा है और एक नल पॉइंटर होता है। तो एक हर ऑब्जेक्ट होती है ना, एक प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करती है। जैसे कि तुम हो, तुम्हारे पापा होंगे, तुम्हारे दादा होंगे, तो ये बहुत लास्ट तक जाएगा जब तक तुम्हारी वैल्यू नल तक नहीं होती। तो इन जावास्क्रिप्ट के अंदर, in JavaScript we have the JavaScript is known as prototypal language. Okay, so in this the object has methods, properties, and it points towards the null object until it reach the end. Okay, so for अगर तुम प्रॉपर्टी रीड करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ है, तो यहाँ पे रन किया है। जैसे एग्जांपल लेट एनिमल ईट्स रैबिट ट्रू किया है and let rabbit jumps true. If rabbit dot proto animal, then all the properties from a animal is inherited by the rabbit. This is called inheritance. If we do the command run, and we can see that this is going to be true. Here are some set of lines that prototype. In this example, you can see that. Let me zoom for you.
the animal having a method of data like eats true and rabbit having true. So it is a prototype. And let me get a new example. Okay, no, but prototype I can give you some historical getter or setter. Prototype is a historical getter or setter for prototype. It is common mistake of nowadays developer to know difference between these two. Getter and setter is a historical prototype. The getter setters, I guess they come in 2014 or 15, but before that there was proto. Please note that proto is not the same as internal prototype. This is a different command and prototype is different property. For it's a getter and setter for property. Later we see situation where it matters. For now just keep in mind say building or understanding JavaScript language. The prototype property is a bit outdated. It exists for historical reason. Modern JavaScript suggests that we use object.prototype and object.setPrototype function instead of getProto. We also cover this function later. Okay, so I will be teach you about the getPrototype and setPrototype of object, but this is the proto that used when there was no getter or setter prototype. So writing does not use prototype. For example, there is in this example you can see that we have animal with a value eats true and a method which is completely blank, and we feel rabbit, and in this rabbit object we are protein the animal, but it's not going to work. Why? Because from the rabbit.work call find the method immediately object and it execute it without using prototype. So and SS properties and exception and assignment is handled setter functions. So writing in such property is actually the same calling a function. You know what is a calling function of recursion when you do it? So it will work. Okay, let me copy this and show you what it's saying. Rabbit bounce. Okay, so in this program you can clearly see that what is saying, it's it's one having an animal object and a rabbit object. In animal object we are setting a method and its value true. In object rabbit we proto animal, we inherit the properties of an animal that the rabbit object can use its methods, its variables, its keywords, anything from the animal object. ओके, इसको कुछ कहते हैं क्या? आई सेड थिंक इसको एसर प्रॉपर्टीज कहते हैं, आर एक्सेप्शन इन असाइनमेंट हैंडल बाय सेटर फंक्शन. ओके, okay, you know instances of this, the value of this is the very important part of this. When you know in the object what is this used for? This is for to identify the class of an instance for a variable. If you have a class of object and we create a multiple objects of a class, for the instance of which user or which data we are using, we use this keyword if you don't know. But what with the prototype inheritance? In inheritance the another one object is using this and the another is using the properties of that object. So what will happen with these keywords? So let's come discuss. Okay, so the answer is simple. This is not affected by prototypes at all. And why is that? Let's continue to search. No matter where the method is found in object or its prototype, in the method call this is always object before the dot. So you get the point. It's not matter अगर object जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने दिस कीवर्ड का यूज करा है तो वो ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर डेटा हम यूजर को फीड करते हैं या कहीं से भी लेते हैं तो वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इंस्टांस पे डिपेंडेंट होगा. So इस सेटर को admin.fullname.uses admin.this.not-user. ओके, सो एक एक्चुअली क्या है, ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट बढ़ाते हैं बड़ा सा और उसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं और जो ऑब्जेक्ट इनहेरिटेड करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, और जब इनहेरिटिंग जो ऑब्जेक्ट को हम इनहेरिटेड मेथड को रन करते हैं तो ये जो मॉडिफाई हो सकते हैं ये स्टेट्स को कर सकते हैं, नॉट द स्टेट ऑफ अ बिग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पापा और तुम हो तो तुम बिगड़ सकते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हारे पापा बिगड़ जाएंगे, तो तुम्हारे पापा जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. ये थोड़ा ऑड एग्जाम्पल था लेकिन काफ़ी सही था तुम्हारे एग्जाम्पल समझने के लिए. तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रखा है, उसको समझते हैं कि एक एनिमल है, यहाँ पे एनिमल ऑब्जेक्ट है, उसके पास एक मेथड है इफ
यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, इफ दिस डॉग इज स्लीपिंग अलर्ट आई वॉक। स्लिप के अंदर मैटर है दिस डॉग स्लीपिंग को ट्रू कर रखा है, बट इन रैबिट वी व्हाट वी डूइंग, देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट रैबिट and we are inheriting the animal object same as, but and we use the rabbit, modify the rabbit is sleeping. If you use rabbit is sleeping, it's going to be true, but if animal is sleeping, then it's going to undefined. Why is that? For resulting the picture, let's understand from this diagram. We have animal, walk function, sleep function. Okay, so if rabbit inherit the properties of animal, naming rabbit has name white rabbit, is sleeping true, but in animal walk is a function, sleep is a function. If you had other objects like bird, snake, etc., we make other objects, they would also gain access to method of animal, but this in each method will call would be corresponding object evaluated at call time before dot. Okay, so not animal. So when we write the data, this it is not stored in this object. As a result, methods are shared, but object state is not. Do you get the point? So it basically says that if you create an object with this property and the state of the object is not going to change, the property of the object it inherited the objected object from the higher class parent class. For simple मैं कहूँ तो ओके, सो सिंपल ये है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है कि तुम्हारे पापा और तुम हो, तुम्हारे पापा की शादी होगी तो तुम्हारी अभी शादी नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी शादी की, तुम्हारे पापा ने शादी की तो रहेगी वो। तो घटिया एग्जाम्पल था, एक सेकंड, कोई एग्जाम्पल मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं इसके लिए। फिर आता है लूप। लूप्स की बात करते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर लूप्स किस तरह से काम करेगा। सो फॉर इंस्टांस दो ऑब्जेक्ट हमारे पास फिर है, एनिमल एंड रैबिट। एनिमल rabbit extends rabbit inherit the properties of animals, and we object dot keys jump and for light prop in rabbit alert function things. So it's not what you want, we will like to exclude inherit properties that built in way. Okay, so we can filter out inherit properties or do something else with them. The for loops is going to work in inheritance object, and we can do various things with the inheritance loops. For example, here is the program which is saying two objects, and we are using loop in rabbit, or if is on, then we are going propping, we are printing alerting the data, else inherited eats. So we run the program, jumps inherited eats. ओके, सो जो इनहेरिट प्रोग्राम है वो है ईट्स, जो हमने एनिमल से लिया है, और जो रैबिट की प्रॉपर्टी है वो है जंप्स। सो ये दो लूप यूज कर सकते हैं हम। इसके लिए एक डायग्राम दिया गया है, जैसे रैबिट्स एक ऑब्जेक्ट है उसकी जंप्स प्रॉपर्टी ट्रू है, और जो एनिमल जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी ईट्स प्रॉपर्टी ट्रू है। ये प्रोटोटाइप हुआ है, लेकिन जो लूप यूज करा है हमने ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप, वहाँ पे क्या अगर टू स्ट्रिंग एक फंक्शन है और हैश ऑन प्रॉपर्टी ये दोनों भी एक फंक्शन है, but in advance they both coming from objects. So now there is a funny thing, in the method rabbit has own properties coming from, you know, I did said object, we do not define it. Looking at the chain we can see that the method provide object property dot has own, in other words it inherited. But why does it has a property and not appear for of loop, eats and jump for in list inherit property? The answer is simple, it is not enumerable. What is enumerable means that it can't be iterative, लाइक कि तुम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज चेक करोगे नोड जेएस के अंदर, अगर तुमने यूज किया हो तो नोड जेएस के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्टेड फुल प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर तुम्हें पता चलता है कि वो आइटरेबल है, इनोरेबल है और एक्सचेंजेबल है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो नोड जेएस को रनिंग करने के लिए एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट की गई है उसकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताती है कि यहाँ पे जो हैसन प्रॉपर्टी, वहाँ पे लूप जो हमने ऊपर देखा तो प्रोग्राम के अंदर ये वाला, यहाँ पे ये जो हमें जो डेटा चाहिए था उसकी जगह यहाँ पे रॉन्ग जंप्स ही आ रहा था, दो बार हो रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने के लिए ये सॉल्व होती है इससे, इस लूप से, फॉर ऑफ लूप से। और ये क्यों होती है, क्योंकि जो इट इज जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा इनरेबल नहीं होता है।
ठीक है। ऑलमोस्ट जो अदर की वैल्यूज होती है वो इनहेरिट प्रॉपर्टीज होती है, सो इग्नोर इनहेरिट प्रॉपर्टीज। तो समरी बात कर लेते हैं, ये वीडियो की लास्ट एंड होगी। तो इन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ हिडन प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी दैट आइदर इज another object or null. ठीक है, we see in the browser that if your program is going to prototype, it's going to null at the last, but it's the long series of the hierarchical objects, and we call prototype. We can use object.proto to access historical getter setter, to cover soon. Next video we are going to cover getter and setter. Because the object refers by prototype is called a prototype. Okay, and if we want to read the property of object or call method, it doesn't exist with the JavaScript to find its prototype. We can object ये सारी चीजें, and you have to practice the program with this function. I provide the link of this website in the description. You go to this website and there is a task, it's given with solution. You try to first do it yourself, and if you can't do it yourself, then check out the solution and try to understand the program and the logic of prototype and the importance of prototype inheritance in a JavaScript. Thank you for your time.